So last class we have discussed about up to speed. We have discussed distance, displacement, and then last topic was speed. So after that our next topic is velocity. Okay. So what is velocity? So velocity of an object is defined as the displacement per unit time of the object. So what is speed? Speed was distance per unit time. Now velocity is displacement per unit time. Okay. So velocity can be also defined as the time rate of change of displacement of an object is called velocity. Time rate of change of displacement of an object is also called velocity. Okay. Velocity is a vector quantity and the SI unit of velocity is meter per second. So what will be the dimensional formula of velocity? So the dimensional formula of velocity is, what is the formula? L t minus 1. So this is the dimensional formula of velocity. So far we have known about speed. What is speed? Speed is distance per unit time. Then speed is a scalar quantity and SI unit of speed is meter per second, and dimensional formula of speed is LT minus 1. Similarly, now we know about velocity. So velocity is displacement per unit time. It is a vector quantity. SI unit is same, meter per second, and dimensional formula is LT minus 1. So we have discussed about velocity and speed then. So just like speed, velocity also have different types of velocity. First one is uniform velocity. So now what is uniform velocity, and then we will discuss what is non-uniform velocity. So first of all, uniform velocity, just like uniform speed. Velocity of an object is said to be uniform if it covers equal displacement in equal interval of time. अगर एक object ने equal displacement cover किया in equal interval of time, then the velocity of the object is said to be uniform. Non-uniform velocity, velocity of an object is said to be non-uniform if it covers unequal displacement in equal interval of time. Okay, so velocity is non-uniform if it covers unequal displacement in equal interval of time. Okay, so these are मैंने यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास हम लोग ने स्पीड के बारे में अच्छा से एक्सप्लेन डिस्कस किया था. सो स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर ऑलमोस्ट सेम. ओनली डिफरेंस इज दैट वेलोसिटी इज स्पीड विथ डायरेक्शन. स्पीड में अगर आप डायरेक्शन लगा दोगे तो वेलोसिटी हो जाएगा, और स्पीड में डिस्टेंस होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है. बाकी सब कुछ सेम है. फॉर्मूला इज ऑल्सो सिमिलर. सो आफ्टर दिस विल डिस्कस average velocity and instantaneous velocity. So now first of all, what is average velocity? So average velocity is the ratio of total displacement to the total time interval. Average velocity is total displacement to the total time interval. And instantaneous velocity is defined as the velocity of a particle at any instant of time. Just like instantaneous speed, velocity of a particle at any instant of time at a particular time is called instantaneous velocity. Okay, so these are the डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. जस्ट ये सेम है, आपका स्पीड का जैसा सेम है. सो यहाँ पे मैंने इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. ओके, सो ओके, बाय द वे सब कुछ लिख लिया कि नहीं? लिख लिया ना? ओके, इसके बाद सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जस्ट लाइक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है. सो विल ट्राई टू फाइंड दोस. सो स्पीड, ओके, आई साइड बाय साइड मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ. सो स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, whereas velocity is displacement per unit time. Speed is a scalar quantity, whereas velocity is a vector quantity. Speed can never be negative. क्यों? Just like distance can never be negative. Just like that, speed can never be negative, and velocity can be negative, positive, or even sometimes zero. but speed कभी zero नहीं हो सकता. Then speed is always greater than or equal to velocity, just like displacement, distance and displacement. Okay, velocity is always less than or equal to speed. So this is the table of difference between speed and velocity. एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि what is the difference between speed and velocity. तब डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, अगर 2 मार्क्स दिए हैं आपको 3 या ये सारे लिखने से भी सेम मार्क्स मिलेगा. 2 लिखने से कभी मार्क्स देने के लिए अच्छा नहीं लगता. सो एग्जाम में अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा तो ये आप आराम से लिख सकते हैं. Okay, this is the difference between, these are the differences between speed and velocity. अगर मैंने पूछा कि what is the similarity between speed and velocity, वो बोल सकते हैं कि नहीं? Similarity क्या होगा? दोनों में सेम क्या है speed and velocity में? So speed and velocity both have the same SI unit, correct, and both has the same dimensional formula. Then so अभी तक हम लोग ने स्पीड के बारे में डिस्कस कर लिया और अभी वेलोसिटी के बारे में भी डिस्कस कर लिया.
सो स्पीड का मैंने वहाँ पे बहुत सारा फार्मूला भी दिया था, यहाँ पे मैंने फार्मूला नहीं दे रहा हूँ क्योंकि फार्मूलास आर सेम, जस्ट वहाँ पे डिस्टेंस होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। और एग्जाम क्वेश्चन में आपको अगर वेलोसिटी निकालने के लिए बोला तो ये फार्मूला यूज़ करना, अगर स्पीड निकालने के लिए बोला तो वहाँ पे जो फार्मूला दिया था वो यूज़ करना। तो मैं अभी नेक्स्ट क्या क्या फार्मूला अभी तक हम लोग ने पढ़ा स्पीड और वेलोसिटी दोनों का, जो हम लोग को न्यूमेरिकल करने के लिए सही है, या डिस्प्लेसमेंट का, और अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। सो फार्मूलाज एंड सिम्बल्स। सो नॉर्मली सिम्बल्स तो अपना हिसाब से ले सकते हैं। सो नॉर्मली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों को हम लोग क्या क्या सिंबल से जाना जाते हैं, कभी कभी तो एस लेते हैं, कभी कभी एक्स लेते हैं, कभी डी भी ले सकते हैं। सो दीज आर द सिंबल्स विच वी कैन यूज़ फॉर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दीज आर डिफरेंट सिंबल्स। ओके, बाय द वे ये पेज में जो भी दिखा हूँ ये लिखने का जरूरत नहीं, ये जस्ट आपको याद रखना है। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिनोटेड बाय एस, समटाइम्स एक्स और समटाइम्स डी। ओके, देन टाइम को हम लोग हमेशा एक ही सिंबल है, टाइम का होता है स्मॉल टी, टाइम इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी। उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी नॉर्मल अगर स्पीड और वेलोसिटी हुआ, स्पीड और वेलोसिटी के लिए हम लोग दोनों के लिए सेम सिंबल यूज़ करते हैं, जो है हम लोग का v। स्पीड और वेलोसिटी के लिए हम लोग v यूज़ करते हैं। ओके, सो कभी कभी बाद में हम लोग u भी यूज़ करेंगे, तो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ v भी हो सकता है और u भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग अगर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बोल रहा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इसके लिए हम लोग क्या सिंबल यूज़ करते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं VAV। सो दीज आर द डिफरेंट सिंबल्स दैट वी यूज़। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग S और X यूज़ करते हैं, टाइम के लिए T यूज़ करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी के लिए V और U यूज़ करते हैं, और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग VAV यूज़ करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट सिंबल्स। ओके, ये सिंबल देखने से आपको पता चल जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, जब भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को लिखना होगा गिवन, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद वी नो दैट बोल के जो भी फार्मूला यूज़ होगा वो लिख के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और फिर से एक बात बोल रहा हूँ, जब भी न्यूमेरिकल फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल का आंसर लिखोगे तो यूनिट मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, इफ़ एनी, अगर यूनिट है तब यूनिट मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो दीज आर डिफरेंट सिंबल्स। उसके बाद मैंने अगर फार्मूला का बारे में बात करूँ तो फार्मूला क्या क्या फार्मूला हम लोग ने सीखा था। स्पीड और वेलोसिटी दोनों मान लीजिए V=S/T होता है, करेक्ट। अगर ये वेलोसिटी हुआ तब ये होगा S मतलब डिस्प्लेसमेंट, T मतलब टाइम, और ये अगर स्पीड हुआ तो V मतलब स्पीड, S मतलब डिस्टेंस, T मतलब टाइम। V एवरेज, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये फॉर्मूला किसका था, एवरेज स्पीड का। लेकिन अगर मतलब बोला कि एवरेज वेलोसिटी का तब क्या होगा, डिस्टेंस को रिप्लेस कर दो, तो ये दिस विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल। कितना टाइम लगा वो डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए, दैट इज द टोटल टाइम इंटरवल। डोंट वरी, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये क्लास में मैं न्यूमेरिकल इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो जस्ट बेसिक्स फार्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। प्लस आप लोग ने अगर ध्यान दिया होगा तो मैं स्पेशल साइंस और जनरल साइंस दोनों के लिए सेम वीडियो ही डाल रहा हूँ। ये लास्ट क्लास का वीडियो और ये वीडियो दोनों सेम है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल कवर नहीं कर रहा हूँ। फॉर स्पेशल साइंस ये लेक्चर के बाद आपको एक DPP मिलेगा, वो आप लोग को सॉल्व करना है। बाकी जनरल साइंस के साथ मैं न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर दूँगा। ओके, बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं बहुत सारा होमवर्क दूंगा, वो भी आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा, हम लोग वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। सो दीज आर डिफरेंट फार्मूलाज। V=S/T, V एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, V एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल। सो दीज आर डिफरेंट फार्मूलाज वी नो। सिमिलरली हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम लोग इंस्टेंटेनियस अगर स्पीड हुआ V=dx/dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होने से भी हम लोग V=dx/dt यूज़ करते हैं। अगर स्पीड हुआ तो x मतलब होगा डिस्टेंस, अगर वेलोसिटी हुआ तो x मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट, दैट्स ऑल। ओके, सो हम लोग ये न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दीस आर डिफरेंट फार्मूला सो फार वी हैव नोन विथ सिंबल्स।
एग्जाम में आपको सिर्फ सिंबल सीखने से हो गया, हम लोग समझ जाएंगे v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, मतलब मैं समझ जाऊँगा कि v मतलब स्पीड है, x मतलब डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, ये हम लोग खुद समझ जाएंगे। ओके, सो दीज आर द थिंग्स यू शुड नो अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ एवरेज स्पीड का। सो इसके बाद एवरेज स्पीड का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ और छोटा मोटा एक दो न्यूमेरिकल है, और स्पेशल साइंस के लिए आप लोग को कुछ होमवर्क्स मिलेगा इसके बाद। ओके, So this is one derivation, or I'll say one question where we are asked to find out the average speed for an object which covers first half of the total distance with speed v1 and the next half with speed v2. So पहले ये समझने का कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या निकालने के लिए बोला है। ओके, सो यहाँ पे मान लो एक टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ आपको जाना है, ए से बी पॉइंट में आपको जाना है। लेट दिस टोटल डिस्टेंस, विल कंसिडर दिस टोटल डिस्टेंस एस, लेट दिस टोटल डिस्टेंस इज एस। Then what is given in the question? First half of the total distance. First half means I will divide this whole distance into two equal portions. Let this is the point O, and this much is, let's say this much is half, means s by 2, and the rest will be s by 2. হ'ব নাই? total distance কিমান আসলে? s আসলে মই আধা কৰি দিলো, তো s by 2 s by 2, তো কি দিয়া আছে? first half with a speed v1, তো প্ৰথমখিনি কিমান স্পীডত যায় v1 আৰু সেকেন্ডখিনি যায় v2। যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়া তোমাক কি উলিয়াব দিছে, you are asked to find out the average speed. So you are asked to find out what is the average speed, and we already know average speed equal to total distance by total time. Correct? Average speed equal to total distance by total time. So what is the total distance? Total distance we know s1 s by 2 plus s by 2. Now total time we don't know. So for first from A to O, A से O तक जाने के लिए मैंने क्या किया, मान लिया कि ये टोटल टाइम लगता है t1 एंड O से B तक जाने के लिए लगता है टाइम t2, क्योंकि अलग होगा ना, क्योंकि दोनों में तो स्पीड अलग है। ओके, सो मैंने मान लिया टोटल टाइम कितना होगा, t1 प्लस t2 होगा टोटल टाइम। अभी मुझे t1 s by 2 ये तो मुझे पता है, लेकिन t1 एंड t2 का वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैं t1 एंड t2 का वैल्यू निकालूंगा। कैसे देखूँ? वी ऑलरेडी नो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। पहला स्पीड कितना है v1, ये v1 है, डिस्टेंस कितना गया s by 2, टाइम कितना लगा, मैंने कितना मान लिया था t1, तो इसमें से मैं t1 निकाल सकता हूँ कि नहीं? क्या आएगा s by 2 v1, यही आएगा ना, आया कि नहीं? उसके बाद फिर से नेक्स्ट हाफ के लिए मैंने मान लिया कि स्पीड v2 है, डिस्टेंस कितना गया s by 2, टाइम कितना लगा t2। अच्छा से देखो, अगर नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसमें से मैं t2 निकालूंगा, कितना आएगा s by 2 v2। आया कि नहीं समझ में? यहाँ पे मैंने क्या क्या समझा कि नहीं? यहाँ पे मैंने क्या किया, मान लिया कि यहाँ से यहाँ जाना है, इसका डिस्टेंस s by 2 है, इसका स्पीड v1 है, तो हम लोग को पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मैंने टाइम कितना मान लिया था t1, तो t1 कितना निकला s by 2 v1। आएगा कि नहीं? ये होगा ना। सो मेरे पास अभी t1 है और t2 है, तो मैं अगर दोनों को यहाँ पे बिठा दूंगा t1 एंड t2 को, तो मेरा v एवरेज कितना आएगा, v एवरेज इक्वल टू s by 2 प्लस s by 2, t1 का वैल्यू निकला s by 2 v1 और इसका वैल्यू निकला s by 2 v2। इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो मेरा आ गया 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। डोंट वरी, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में करके दिखाया, मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आया था, और ये आपको लिखना नहीं है अभी। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि मैं इसका अच्छा सा कैसे लिखना है एग्ज़ाम में उसका एक क्वेश्चन बना के मैं दे रहा हूँ ऑलरेडी, आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। ये डोंट राइट दिस वन, ये मत लिखना अभी, पहले समझ लो यहाँ से। अगर यहाँ पे ये समझ गया तो हो गया, थोड़ी देर बाद आपको लिखने के लिए मिल जाएगा। एक क्वेश्चन का फॉर्मेट में मैं इसको दे रहा हूँ। ओके, so this is the question. A car covers first half of the total distance with a speed 36 km per hour and second half with a speed 54 km per hour. Find the average speed of the car.
So ইয়াৰ কাৰণে ফৰ্মুলা এটা অলৰেডি ডেৰাইভ কৰি দেখাইছিলোঁ কেনেকৈ হয় যদি ফৰ্মুলাটো মনত নাথাকে দেন ইউ কেন সলভ বাই দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড হুইচ উইল বি এ লং প্ৰচিডিয়ৰ যদি ফৰ্মুলাটো মনত থাকে ইউ কেন ডাইৰেক্টলি এপ্লাই দ্য ফৰ্মুলা অ'কে বিফ'ৰ ডেট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে লেটছ ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড so let's say this is the total distance we don't know the total distance let's say this is the total distance from A to B a car covers first half of the total first half means adha let's say this is the point this portion it has covered with a distance with a speed of 36 kilometer per hour and the next half with a speed of 54 kilometer per hour if we apply the formula directly then we know যদি ফাৰ্ষ্ট হাফ এণ্ড ছেকেণ্ড হাফ দিয়া থাকে if first half and second half is given that means covers equal distance first half and second half is given in that case we can apply the formula directly average we are asked to find out the average speed so average speed is denoted by VAV and average speed equal to we can directly apply the formula which is 2V1 V2 divided by V1 plus V2 both these are in kilometer per hour so I can directly use in kilometer per hour also later I will convert this into meter per second okay so 2 into V1 is 36 kilometer per hour and this one is 54 kilometer per hour and below this will be 36 plus 54 unit will be kilometer per hour so this will be your answer I don't know the exact answer let it be 54 divided by this will be 0 9 let it be so this is the answer actually if we apply directly the formula but if we don't know how to apply the formula or if we don't remember the formula যদি আমাৰ ফৰ্মুলাটো মনত নাথাকে then what we will do আমি কি কৰিম যদি ফৰ্মুলা মনত নাথাকে so ফৰ্মুলা মনত নাথাকিলে আমি ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড ইউজ কৰিম and according to the traditional method কি হয় we will assume this distance let this total distance is x let the total distance be x then কি হ'ব half that means this portion will be x by 2 and the next half will be x by 2 because half adha divide korilu no so distance x by 2 with speed 36 km per hour I will using this two information I will calculate the time taken then again using these two information for a later portion I will again calculate the time taken after that I will use the formula of average speed as V average equal to what is the average speed this is the total distance by total time this is the traditional method total time how we will get total time we will get this is the distance and this is the speed so using speed equal to distance by time for the first portion we will calculate the speed which will be t1 let's say this will be time taken is t1 and for the later portion let time taken is t2 then total distance will be what is the first x by 2 and second portion is x by 2 and time is t1 plus t2 we will get the answer okay so this is how we will solve and we will don't worry we will get the same answer I am not going to solve by the procedure so ami same answer pam okay so this is the first question this is another question calculate the time taken by the light emitted from sun to reach the surface of the earth yat ki hodise light to jodi sunor pora ahi ase kiman time lagibo earth ot poribo karone because lighter ami speed gom pao we know the speed of light is this much 3 into 10 to the 8 meter per second and distance between sun and earth is this much we know the distance and we know the speed or velocity now we can calculate the time what will be the time taken so yahan pe kya pucha gaya hai actually जब सन से लाइट निकल सन से अर्थ में लाइट पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है वो पूछा गया है और हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस सो वी नो स्पीड इक्वल टू or no first let's write given velocity of light v equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second distance d equal to 1.5 into 10 to the power 8 kilometer 1.5 into 10 to the power 11 meter अभी मत पूछना क्यों आया कैसे आया so now we know what we know v equal to d by t we know velocity equal to displacement by time or velocity equal to distance speed equal to distance by time okay from here we asked to find out time which will be distance by or which will be distance by velocity distance is 1.5 into 10 to the power 11 this is 3 into 10 to the power 8 and this will be time is in
second. Why second? Because meter per second and below this is meter, so this will be second. If we solve this, we will get how much? Kiman pam ami 1.5 divided by 3 into 10 to the power 11 by, so I'll 15 into 10 to the power 10 minus 8 divided by 3. This will be your answer. This will be 5 into 10 to the power 2 second, which is 500 second. Now 500 second, if we divide 500 divided by 60, we will get in minute. So 500 divided by 60 will give us, so if we divide 500 divided by 60, 500 divided by 60, we will get 8.33. So this will be 8.33 minute. So the time taken by the light from sun to reach the surface of the earth is 8.33 minute. So 8 मिनट लगता है और सन से लाइट के अर्थ में पहुंचने के लिए. ओके, इट टेक्स अबाउट 8 मिनट. डन. सो ये दो क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्लास से हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे, नया नया टॉपिक भी सीखेंगे.